या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञाय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। सम्प्रति अष्टाध्याय्यां प्रवेशार्थं किञ्चित् विषयज्ञानं वयं प्राप्नुमः। एतावता वयं वर्णानां ज्ञानं प्राप्तवन्तः, स्वराणां व्यञ्जनानां च। तस्मादनन्तरं तस्य रचना कथं भवति, कति स्वराः सन्ति, व्यञ्जनानि सन्ति, पुनः स्वराणां प्रकारः प्रभेदाः भवति, उदात्त अनुदात्त स्वरित, पुनश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुत व्यञ्जनानां प्रकाराणाम् अपि वयं ज्ञातवन्तः। तस्मात् अनन्तरं वयं इत्संज्ञा प्रकरणं स्वीकृतवन्तः। तस्मात् पूर्वं महेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासः अस्माभिः क्रियते। प्रत्याहाराणाम् उपयोगेन अस्माकं कक्षा अपि अस्माकम् अभ्यासः अपि अप्रवर्तत। इदानीं तस्मादेव अहं पुनः प्रारम्भं करोमि। प्रतिदिनं माहेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासं वयं कुर्मः। कोऽपि जनद्वयं, भगिनी वा भ्राता वा, एकमेकं वारं माहेश्वरसूत्राणाम् एकवारं पठनं कुर्युः इति मम अपेक्षा। का करोति अहं पद्मावती भगिनी? करोमि। आशा जी। आशा भगिनी। आयुणादिलृक् एङ्गैयौच्छैवरटलन्यमङ्गणनं झबै घटदश जबगडदश खफ छठ थ तव कपै शशसरहल् उत्तमम्। इति महेश्वराणि सूत्राणि माहेश्वराणि सूत्राणि महेश्वरस्य इमानि माहेश्वराणि। पद्मावती भगिनी एकवारम्। आं महोदय, नमस्ते। नमस्ते। अयुण् केयोङ् गायोच् हैवरट् लन् न्यमगणनं झभै गडदश जबगडदश खाफ चेटत चेटतव कपै शशसर् हल् इति महेश्वराणि सूत्राणि। उत्तमम्। तस्मात् अनन्तरं तेभ्यः सूत्रेभ्यः वयं प्रत्याहाराणां निर्माणम् अपि कृतवन्तः। प्रत्याहारम् अहं पृच्छामि,
ये कोऽपि वक्तुम् इच्छति हस्तम् उन्नयतु। सुजाता भगिनी, झल प्रत्याहार, च छ झ झ झल प्रत्याहार। छल छो लो नो छो झल छल छो ठो थो छोटो छ चोट न झ झ झ झ बोल चवर्गस्य चतुर्थ वर्ण झ। तो झ ठो थो तो तो वो न नहीं, च भवती इदानीमेव माहेश्वर सूत्राणां पाठनं कृतवन्तः। तानि शृणोति वा? आम तर्हि केन कारणेन अवगन्तुं न शक्नोति? झल् इति वर्गचतुर्थाः। झबा झबा घोड़ गड़दश जब गड़दश खो पो छो ठो थो चट चटताव कपय शससर हल आमा। उत्तमं। तर्हि वयं किं ज्ञास्यामः? तर्हि वर्गचतुर्थाः, हाँ वर्ग चतुर्थः तृतीयाः, तृतीयाः और क वर्ग प वर्ग न कपय वर्गप्रथमाः, वर्गद्वितीयाः, उष्माणाः। हाँ क प इति क वर्ग प वर्ग इति नास्ति। हम लोग पवर्ग नहीं बोलते हैं ना, कप ये तो पहला वर्ण है। हम हाँ लोग ने पहले चतुर्थ वर्ण को किया, हाँ उसमें कोई चतुर्थ क वर्ग तो चवर्ग नहीं बोला हम लोग ने। नहीं प्रथम हाँ, चतुर्थ पहले वर्ण आदौ किम झल झभञ् खड़धश एते वर्ग चतुर्थाः भवन्ति। हाँ यत् कोऽपि कस्यापि वर्गस्य भवेत्, वर्ग चतुर्थाः भवेत्। तदनन्तरं वर्ग तृतीयाः, तृतीया तस्मात् तदनन्तरं अनन्तरं वर्ग द्वितीयाः, वर्ग हाँ प्रथमाश्च, द्वितीय हाँ प्रथमा अनन्तरं त्रयः अंत शकाराः, शकारः अंतस्थ हाँ, तथा हकार। क क हकार हकार आप उसको क वर्ग मत बोलिए, हाँ क्योंकि हाँ कारण मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले हाँ बोलते हैं कि वर्ग चतुर्थाः, तो हाँ कोई भी वर्ग के चतुर्थ वर्ण, वर्ग हाँ तृतीया तो कोई भी वर्ग के चतुर्थ तृतीय वर्ण। हम्म तो उसमें मैंने कवर्ग खबर कवर चवर टवर तो नहीं बोला कुछ भी। जब हम लोग लिखेंगे तो वो हिसाब से लिखेंगे, कुचुटु तुपु एते उदिताः, कवर्ग उ, चवर्ग चू, टवर्ग टू, पवर्ग पू, चवर्ग चू कुचु टू तुपु तवर्ग को तू, कुचु टू तुपु एते उदिताः, तो उदित उसको बोलते हैं। तो जब हम कु बोलेंगे तो कवर्ग की संज्ञा होगी, पूरा कवर्ग को लेंगे। तो यहाँ जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, झल में झभय घड़ अधश, उसमें कोई भी वर्ग तो नहीं बोला हम लोग ने, केवल चतुर्थ वर्ण बोला, चतुर्थ वर्ण वर्ग के तदनन्तरं चतुर्थ वर्ण। हाँ जबगडदश तृतीय वर्ण हाँ हाँ खप खप चटथ चटतव इति द्वितीय और प्रथम वर्ग कपय पर्यंत हाँ और उष्मणा। हाँ उष्माणः हाँ सर्वैः अवगम्यते वा? अस्तु, हाँ महोदय एकः शङ्का अस्ति महोदय। वदतु नमस्ते भगिनि। नमस्ते। जल के लिए अनुनासिक विहाय वर्गीय व्यंजनानि अधिकम श स ह ये बोलना चाहिए ना महोदय? तो मैंने यही उसका बोला, ऑर्डर वर्ग आप अनुनासिक व्यंजनानि मतलब वर्ग पंचमाः हम लोग के बाद दे दिया। हाँ तो क्या हुआ, हाँ वर्ग चतुर्थ, वर्ग तृतीय, वर्ग चतुर्थ द्वितीय, वर्ग हाँ प्रथमा और शशश, यही जो आपने हाँ बोला, मैं वही तो बोला। हाँ महोदय, मेरा प्रश्न वो नहीं है। मेरा हम्म, प्रश्न ये है कि हम सीक्वेंस वही सीक्वेंस में लिखना चाहिए या बोलना चाहिए या हाँ, कैसे भी यही बोल सकते सीक्वेंस में हैं? बोलना चाहिए जैसे पाणिनि ने लिखा है। हाँ जब हम हाँ लोग रचना करेंगे तो हाँ क ख ग घ हाँ और अंग,
तो क्या होगा, क है वो अल्प प्राण है, ख है वो महाप्राण है, फिर ग है अल्प प्राण है, हाँ घ है महाप्राण है। तो हम लोग जगह चेंज कर देंगे तो फिर उसका जो सीक्वेंस है वो टूट जाएगा। हाँ तो मुझे अच्छा। यदि फोर्थ चतुर्थ हम्म, वर्ण मुझे महाप्राण कहना है तो मैं महाप्राण नहीं कह पाऊंगा उसको, यदि आप उसको ज साथ हाँ में बैठाएंगे तो। ज है वो अल्प प्राण है। हाँ ओके। तो हम लोग ने अल्प प्राण भी अस्तु महाप्राण भी किया है और कर्कश और मृदु व्यंजन भी किया है। तो वर्ग प्रथम और वर्ग द्वितीय जो है और शश है जो खर वर्ण बोलते हैं हम लोग, खर प्रत्याहार में वो कर्कश वर्ण है। यदि हम लोग चेंज कर देंगे तो खर के जगह पर कोई और ही वर्ण घुस जाएगा अंदर में, ठीक है ना। तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, जो सीक्वेंस फिक्स किया है पाणिनि ने हम लोग को वही हिसाब से ही बोलना पड़ेगा। तो हाँ ठीक है। तो अस्तु झभय घड़धश इदानीं जब गड़दश ख फ छ ठ त च ट त कपय श श सर हल। तो z से लेकर के लकार ल तक। तो जब हम लोग उसको बोलते हैं यदा वयम के वर्णाः सन्ति एतेषु सूत्रेषु अंतिम वर्णः इत्संज्ञकः भवति। यदा झल् वर्णः अस्ति तर्हि अंतिम लकार हल इति अंतिम सूत्रमस्ति, तस्य लकार इति अस्माभिः न परिगण्यते। प्रत्येकस्मिन् सूत्रे अंतिम वर्ण इत्संज्ञक वर्णः अस्ति। अस्तु, यथा अ इ उण अत्र अंतिम वर्ण अणकार अस्ति, अणकार इति न परिगण्यते, पर केवलम अ इ उ एतस्य एव ग्रहणं भवति। तथा वयं झल् इति स्वीकुर्मः चेत् आदौ किमस्ति झ भ ञ, तर्हि ञकारस्य अत्र न परिगण्यते, यतोहि ञकार पञ्चमवर्णः भवति। परन्तु वयं किं स्वीकर्तुम् इच्छामः, चतुर्थवर्णः केवलम्। अतः झ भ घ ढ ध। अस्तु, तस्मात् अनन्तरं वर्ग तृतीया ज ब ग ड द। तस्य षकारस्य न स्वीकर्तव्यं, षकार तालव्य षकार इत्संज्ञकः भवति। पुनः ख फ छ ठ थ च ट पर्यन्तं त च ट त। तस्मात् अनन्तरं वकार अस्ति इत्संज्ञा अस्ति, तो वकारस्य ग्रहणं न भवति। पुनः क प य यकारस्य न भवति, श श स रेफ इत्यस्यपि न भवति, श श स हल् हल हले लकारस्य न भवति। अन्तिमवर्णाः इत्संज्ञकवर्णाः भवन्ति, तेषां लोपः भवति। तस्मात् अनन्तरं वयम् इत्संज्ञा प्रकरणं वयं ज्ञातवन्तः। इत्संज्ञा वर्णानां प्रक्रिया अस्माभिः अधीताः। सुषमा भगिनी, हाँ वदतु। मृदु ह from Hayavarata and Ushman h from Hal. There is no difference. There is no difference. So why? Because Panini has to have two different. He used two different properties. He wanted to have two different properties. So that's why he has wrote in two different sutram. For example, ha is an antastha varna also. So that's why he has used Hayavarat and Lan. So these are antastha. Yara lava antastha. And punascha, if I want to say Hasha varna, so Hasha is a Mritu Vyanjana. Again, start from Hayavarat and up to Shakara. Now, what about the Shal varna? Sha, sa, sa, and ha. Shal Ushmana. Because I want to have Shal as an Ushmana. So if I put it at the end and not at the beginning, I won't be able to take a Mridu Vyanjanam, because Shasha Sa, they are not Mridu Vyanjanam. So they are Ushmana. So he has put this ha, hakara in two different places, but they are same thing. धन्यवाद महोदय।
स्वागतम्। इदानीं इत्संज्ञा प्रकरणस्य सूत्राणि इदानीं सर्वे जानन्ति इति मन्ये। तस्याम् अभ्यासः अस्माभिः कृतः। अहं का वदामि वदति? अहं वदामि उषा भ्रातः। भगिनी अहं वदामि वदतु। महोदय, अहं वदामि। 4 सूत्राणि उषा भगिनी वदति, तदनन्तरं कार्तिकेय महोदय वदति। 4 सूत्राणि कार्तिकेय महोदय। प्रथम अस्ति उपदेशे जनुनासिक इत्। उत्तमम्। इसका एक वार्तिक भी है। उसका नहीं है, उसका नहीं, उसके बाद वाला सूत्र बोलिए। हाँ जी, ओके। दूसरा है हलंत्यम, और अब तीसरा वार्तिक है बोलिए। जी, हाँ अब सॉरी, वार्तिक बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, इत संज्ञा होती है। मैंने वो आपको है क्यों वार्तिक। दूसरा के बात करने के लिए बोला, बताइए। क्योंकि हलंत्यम हल पहला स्वर है और फिर व्यंजन का है, हाँ, तो आप इसलिए 2 सूत्र, उसके यदि आप बाद पहले सूत्र से आप बोलेंगी इरित संज्ञा जी वाच्या, तो रेफ का तो हलंत्यम सूत्र से होती है, जी तो आपको जी 2 सूत्र के बाद में ही आपको इर बोलना पड़ेगा। जी जी, जैसे हम इंडिविजुअल एक एक स्वर का वर्ण की व्यंजन संज्ञा का न खत्म। करके इर जी जी जैसे ग्रुप बना करके इसकी संज्ञा साथ में कर देते हैं। जी, अब और आगे। उसके बाद है हलंत्यम हलंत्यम हलंत्यम, नहीं, क्या है, न विभक्तौ तस्माः, उत्तमम्। न विभक्तौ तस्माः। और उसके बाद है आदिर् टुण्डवः, न न न टुण्डवः, सम्यक् एव, न सम्यक् अस्ति। सम्यक् इदानीं न सम्यक् एव। सम्यक् एव भगिनि। हम्म। इदानीम् उषा भगिनी प्रथमस्य सूत्रस्य व्याख्या करोतु कृपया। उपदेशे जनुनासिक इत्। मतलब जो उपदेश में अनुनासिक है उसकी इत संज्ञा होती है। इसकी जैसे अनुनासिक क्या? अनुनासिक ई, नहीं, आपने बोला, मैं एक बात सुन लीजिए। जी जी, आपने बोला उपदेश में अनुनासिक है, तो अनुनासिक क्या है? आप सूत्र पढ़िए पहले से ध्यान से। उपदेशे, उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे क्या? जनुनासिक, हाँ, तो जनुनासिक का मतलब उसको तोड़ करके क्या पढ़ेंगे, विग्रह करके? कोई मत बोलिएगा प्लीज, वो खुद बताएंगी। अनुनासिक जिसमें है, तो क्या कौन से वर्ण अनुनासिक होंगे? स्वर होंगे। हाँ, तो फिर अच, अच, उपदेशे अच अनुनासिक इत। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हम लोग जी, बोलते हैं उपदेशे जनुनासिक, तो ये जनुनासिक का मतलब क्या है? अच अच, अनुनासिक, तो उसकी जस्व होकर के जनुनासिक हुआ है। जी जी। हाँ। और उसके बाद है हलंत्यम। हलंत्यम का मतलब हल के अंत में जो है उसकी इत संज्ञा होगी। हल के जैसे अंत में नहीं, अंतिम हल की। अंतिम हल की, सॉरी, हाँ। जैसे एग्जाम्पल क्या दें हम उसका, शिंग धातु ले लीजिए। हाँ, तो शि, शि, उसमें ग की संज्ञा हो जाएगी क्योंकि हाँ, वो हल है अंतिम हाँ, संज्ञा की, वो अंतिम हल है। हाँ। इदानीं ओंकार महोदय तृतीयस्य सूत्रस्य व्याख्यां करोतु कृपया। तृतीयसूत्रं न विभक्तौ तुस्मः। कृपया बोधयतु। विभक्ति इति व्याकरणविशिष्टा संज्ञा। के प्रत्ययाः अन्तर्भूताः भवन्ति एतस्यां संज्ञायाम्? अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। मकार न भवानी भगिनी कृपया
मा करोतु कृपया, म्यूट भवन्तु। विभक्ति क्षम्यतां विभक्ति एता एता काचित् संज्ञा, विशिष्टा संज्ञा इति भवता उक्तं खलु। तर्हि के प्रत्ययाः भवन्ति एतासां संज्ञायां? what pratyayas are included in this vibhakti संज्ञा? मित प्रत्यय नहीं, ध्यान से सोच करके बताइए। आप ही ने लास्ट टाइम जवाब दिया था इसका। न विभक्तौ तुस्माहा, विभक्ति प्रत्ययों में तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती, तो वो कैसे प्रत्यय हैं? कौन से प्रत्यय को हम लोग विभक्ति के नाम से जानेंगे? सुप और तिंग प्रत्यय। 21 सुप प्रत्यय और 18 तिंग प्रत्यय, उसको विभक्ति प्रत्यय के नाम से, विभक्ति संज्ञा से जाना जाता है। So combined of sup and ting pratyayas are called vibhakti. So this is applicable only for the vibhakti pratyayas. So what the sutra says, tell me. सूत्रेण मकारस्य इत्संज्ञा निषेधा। केवलं मकारस्य वा? इदानीं वयम् अनुवृत्तिः विषये पठितवन्तः खलु। अनुवृत्तिः इत्युक्ते किं? प्रथमसूत्रं किं वदति अस्मान् किं वदति इत्युक्ते उपदेशे जनुनासिक इत् स्यात्। तस्मात् अनन्तरं द्वितीयं सूत्रं किमस्ति? हलन्त्यं। परन्तु वयम् उपरिश्चात् सूत्रात् वयं किं कृतवन्तः? उपदेशे इति स्वीकृतवन्तः, इत् स्यात् इति स्वीकृतवन्तः। तर्हि उपदेशे हलन्त्यम् इत् स्यात्, कंप्लीट सूत्र। न विभक्तौ तुस्माहा, उपदेशे अंतिम हल न विभक्तौ न इत् स्यात्। क न स्यात्? तवर्ग दंत सकार मकार। इदं सूत्रं हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रस्य बाधक सूत्र अस्ति। निषेध करोति। If there is a vibhakti pratyaya, for example, I give you tiptasji, sipthastha, nittvasmas. So parasmaipadi pratyaya 9. So tatra tas masthas एतेषु सकारस्य अंतिम सकारस्य इत्संज्ञा न भवति। इसमें हाँ, जैसे तवर्ग का बात अलग है, अंतिम त होगा तो नहीं होगी, लेकिन जैसे हलंत्यम सूत्र क्या प्रसक्ति हम करेंगे तो तस और भस की संज्ञा हो सकती है, परंतु इसी ने पाणिनि ने उसको बांध दिया, क्योंकि इसमें यदि प्रत्यय की संज्ञा करेंगे तो उसका प्रत्यय का रूप बदल जाएगा, जो सुबंत रूप होगा या तिङंत रूप होगा वो बदल जाएगा। इसीलिए उसने बंद कर दिया, भाई ये चीज प्रत्यय में आप नहीं करेंगे। समझ में आया आपको? जी। समझा पाएंगे अभी आप सबको? एक बार कोशिश करिए। न विभक्तौ तुस्मः मतलब तवर्गीय वर्णः च सकारः च मकारः इते इत्संज्ञा न भवन्ति। केषु प्रत्ययेषु न भवति? सुप् तिन् विभक्ति प्रत्ययेषु न भवति। विभक्ति प्रत्यय। The vibhakti is the main thing you have to keep in mind. विभक्ति होने से ही इसमें ये बाधक सूत्र है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, सो वी कैन नॉट मिस इट। Sir, one doubt, sir. In this, actually, sup is called a vibhakti pratyaya, but ting is not generally vibhakti pratyaya. No, but, ting is also vibhakti pratyaya. It is a vibhakti sanya. Both sup and ting are called vibhakti sanya. Okay. What we are doing vibhakti is in a karak prakran. Prathama vibhakti, dvitiya vibhakti, that is karak prakran. And
for the Vyakarana, this is Panini regarding the Sanya, the Vibhakti Sanya has been given to all Sup Pratyayas, 21 of them, and all Ting Pratyayas, 18 of them. Oh, thank you, sir. Good. एतेन कारणेन यदा वयं सुप्रत्ययेषु द्विवचने भ्यां 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 वयं पश्यामः खलु, द्विवचने तृतीया विभक्तौ चतुर्थ विभक्तौ पंचमी विभक्तौ अपि भ्यां 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 रामाभ्यां 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 तत्र मकारस्य इत् संज्ञा न भवति। पुनः द्वितीया विभक्तौ रामम् इति रूपं वयं प्राप्स्यामः खलु, सु औजस् अम् औषस्, अत्र मकारस्य संज्ञा न भवति, यतोहि अयं प्रत्ययः विभक्तिसंज्ञकः भवति, रामम् इति रूपं भवति। अस्तु, सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? महोदय अवगम्यतां, परंतु याद नहीं रहता है, फिर भूल जाते हैं। नहीं, आपको सिंपल रखना है। देखिए, विभक्ति में हम लोग को कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि विभक्ति मतलब कारक, राम रामौ रामः, लेकिन ये नहीं है। जब हम लोग एडवांस लर्निंग करेंगे तो पाणिनि ने एक संज्ञा दी है, ये संज्ञा है कि हम लोग ये ग्रुप ऑफ प्रत्यय को विभक्ति के नाम से जानेंगे। उसमें 21 विभक्ति के रूप आते हैं और 18 तिंग प्रत्यय आते हैं। उसमें वो जो 18 और 21 प्रत्यय हैं, उसमें हलंत्यम सूत्र से दंत सकार, मकार और तवर्ग जो अंतिम है उसकी इत संज्ञा नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको मन में रखना पड़ेगा। ठीक। इदानीं भवानी भगिनी वदतु। हरि ओम महोदय। राम राम सुप्रत्यय द्वितीय एकवचनं रामम् इति रामम् इति अवशिष्यते अन्तिमे। अत्र राम अधिकम् अम् इति अस्ति किल, द्वितीय प्रत्यय। अत्र सन्धि न भविष्यति, किमपि कार्यं न भवति वा अत्र? राम अधिकम् अम् अति चेत् रामाम् इति आगन्तव्यम्। अम् अति तर्हि अतो गुणे इति सूत्रं भवति। अकार अकारयोः मध्ये एकादेश भवति, अकार एव अवशिष्यते। अस्तु। So there is a sandhi called ato gune. So at and at following akar, and after akar there are two akars. There is only one akar. Okay. This is the adesha. Acha. For example, we know the padam, right? Pathati, pathatah, pathanti. So how does pathanti comes? Because the antim sutra is tiptasji is called ti taha anti. Ti taha anti. Anti. So ti taha anti. So we have patha and anti. Patha is an adanta anga, and anti is also starting with a. So why there is not a vruddhi sandhi here? Because there is a prasakti of ato gune. So there are two akara. Ata, so hrasva akara followed by a guna. Guna means a. So then only four. So in the place of both the akaras, only one akara will stay. So pathanti. Okay. धन्यवादः। पठन्ति। अस्तु, तर्हि तादृशमेव सर्वे स्थाने भवन्ति किल? अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, इदानीं चतुर्थं सूत्रं का बोधयति? व्याख्यां करोतु कृपया। वदामि वा महोदय? नमस्कारः। लक्ष्मी भगिनी नमस्कारः, स्वागतम्। आदिर्निटुडवः। 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 नकार न उच्यते, नकार न उच्यते। चवर्गस्य पञ्चमवर्ण कथं भवति? पञ्चमवर्ण, महोदय, चवर्गस्य पञ्चमवर्णः तु टवर्गः, तदा टवर्गः नाम भगिनि आदिर्हि टु डु, टु डु। टवर्गः अस्ति चेत् डकार अपि तु टवर्गे भवति। टु डु तर्हि केवलं केन कारणेन डकार अपि विद्यते अत्र।
आदिर्यिङ् टुडवः इति सूत्रमस्ति खलु। टु तथा डु तथा इ एतेषां वर्णानाम् इत्संज्ञा भवति। आदिस्थः आदिस्थितः उपदेशस्य आदौ उपदेशस्य आदौ न उपदेशावस्थायां आदौ धातोः विद्यते आदिस्थितः ञ टु ta da. Not ta and da. I told you not. It is to and do. Do. Panini has not told ta. He's heard to. For example, tu nadi, dukriya. It is not said. He is not told dakriya or tanadi. Right? He has specifically told tu nadi to make it dvit dhatu and twit varna. So when I am doing itsanya, for example, itsanya of ikara, so it will be idit dhatu. Itsanya of ukara will be udit dhatu. Oh. So similarly, ye, to, do. Only ye, to, and do. If you find ye, to, and do, only their three varnas will get itsanya. वर्णसमूहः न स्यात् कदापि। यदा वा इ भवेत्, वा टु भवेत्, वा डु भवेत्, समूहः न स्यात् कुत्रापि। विकल्पेन त्रिषु कोऽपि भवितुम् अर्हति। अस्तु, आं महोदय। इदानीं इत्संज्ञकाः भवन्ति। उदाहरणं दातुं शक्नोति वा? इदानीं का वक्तुम् इच्छति कार्तिकेय महोदय? वक्तुम् इष्टवान् खलु? महोदय, षष्ठं सूत्रं शः प्रत्ययस्य। शः प्रत्ययस्य तदनन्तरं चुटु अनन्तरं लसक्त्व तद्धिते। पुनः एकवारं लसक्त्व तद्धिते। तव नास्ति, क्व लसक्त्व, अहं तत्त्वे वदामि लसक्त्व। It is la sa ku plus attadite. लशक्व तद्धिते। Yes. Yeah. अनन्तरं तस्य लोपः। उत्तमम्। इदानीं वाक्यं करोतु कृपया। शः प्रत्ययस्य ते उपदेशे प्रत्ययस्य आदिः शकारः इत्संज्ञा भवति। यथा अलस् प्लस शै प्रत्यय अत्र हलन्त्यरूपेण लोपो भवति। अलस प्लस श्य अनन्तरं अत्र सूत्रकार श प्रत्यय कारणेन अलस प्लस य आगच्छति। उत्तमम्। इदानीं उषा भगिनी किमपि वक्तुम् इच्छति वा? उषा चेन्नई वा बेंगलुरु वा? चेन्नई। चुटु आदि उपदेशे प्रत्ययस्य आदौ स्थितः च वर्गः च वर्गस्य इत्संज्ञा भवति। उत्तमम्। एकम् उदाहरणं दातुं शक्नोति वा? चुटु I forgot, I cannot remember. जस् प्रत्यय अस्ति, टाप् प्रत्यय अस्ति। टाप् इति कश्चित् स्त्री प्रत्ययः। Okay, so there only the R is left after the tap. Per will go away because of halantam. So only A will left. A will be left. Only A will be left.
Yeah, yeah. So aja plus tap is aja. Aja. Okay. So that is how we derive the Stri Rupa from Apullinga. Okay. Okay. Oh. What about chu? Any example for chu? Just Chu. pratyay. Yes. Just Rama pratyay, just adhigam pratyay. just. हाँ. Oh, Rama okay. adhigam Soup. oh, just. just. Okay. In the soup. Okay. 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 In the soup we have prathama vibhakto bahuvachane. Su au just. Yeah. Just iti pratyaya Yes. bhavati. तस्य आदि Okay. स्थितः जकारस्य इत्संज्ञा भवति. It's अनेन सूत्रेण अस् इति अवशिष्यते. अस्तु. तदनन्तरं सुन्दरेश महोदय वक्तुम् इच्छति वा? लचक्वत् तद्विते. हाँ, तस्य विवरणं करोतु. आदौ विद्यमानः लकार चकार कवर्ग वर्णः इत्संज्ञा भवति. पुनः एकवारं. कुत्र? तत् औपदेशिकस्वरूपस्य आदौ विद्यमानः लकार चकार कवर्गः इत्संज्ञा भवति. सर्वेषु प्रत्ययेषु भवति वा? अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया. तद्विदान्त प्रत्ययस्य. तद्धित प्रत्यय विहाय. तद्धित भिन्न प्रत्ययस्य. न. So apart from तद्धित प्रत्यय अतद्धिते इति सूत्रे अस्ति खलु. लशकु अतद्धिते. So तद्धित प्रत्यये अस्मिन् सूत्रस्य अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति. So लकार तालव्यषकार कवर्गस्य आदौ स्थितः प्रत्ययस्य अतद्धिता प्रत्ययः स्युः. तद्धित प्रत्यय परे इति न भवति. इदानीम् अन्तिमं सूत्रं का वदति? कृष्णप्रिया भगिनी, सरलमस्ति. तस्य लोपः. तस्य लोपः. तस्य लोपः. So please note, say out of the 8 sutrams, all are Vidhayak sutram. So it denotes this to be Itsangyak Varna. But what is the prakriya? What are we supposed to do with Itsangyak Varna? Tasya lopaha karniyaha. What is the final? This is the only prakriya sutra in the all 8 sutranis. The first 7 sutras are stating that these are the Itsangyak Varna. But what we are to do? If I identify Itsangyak Varna, then what are we supposed to do? Tasya lopaha karniyaha. Tasya lopaha. Astu? Avagammyate va? Sarvaihi? That means it applicable to all the previous 7 sutras. Yes, all. So once you identify a Itsangyak Varna, you just classify a particular dhatu or a pratyaya based on this, and then you begin a lopa, just to delete it. Okay. So there are, when for example, say shakan iti kaschit pratyaya, shanach pratyaya, tatra shakarasya itsanya bhavati khalu, shanach pratyaya. लशक्व अतद्धिते इति सूत्रेण शानच इत्यस्य तालव्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति. So this pratyaya is called shit pratyaya. न अवगम्यते वा कार्तिकेय महोदय? अहम् अवगम्यते तावत् पर्यन्तं शानच् इति तस्मिन् हलन्त्यम् इति शकारं अवशेषम् आनच् च इति अपि आम्, केवलम् आन इति अवशिष्यते. केवलम् आन् अवशिष्यते. आन इति अवशिष्यते. शकारस्य अपि संज्ञा भवति लशक्व तद्धिते इति सूत्रेण. तालव्य शकारस्य संज्ञा भवति आ इति अवशिष्यते.
तदनन्तरं चकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति. आन् अवशिष्यते. आन इति अवशिष्यते. Yes. So that is why the pratyaya is called shit pratyaya. Ship. And chit pratyaya also. Chit pratyaya. Pradhamam kim sir? Pradhamam kim? Shit pratyaya. Shit. So basically, whatever becomes the it, you add a it to it and call it that pratyaya. That's right. Exactly. If it Because we are classifying. If it ka goes off, we make it kit. If Yes. e goes off, we make it it. Yes. If okay. Kaka gaga we goes out, we got gink. If una goes out, nik. And Okay. every prakriya, every itsangyak varna have the specific meaning. Why are we doing this? In case of a dhatu, if I give you an example, the dhatu having as an itsangyak varna will always have a atmanepadi pratyaya. For example, shing shete iti dhatu bhavati. Shing atya nukanasya itsangya bhavati. So all these dhatu having ngit pratyaya, ngit itsangya ngit pratyaya se itsangya te sarve ngit pratyaya bhavanti. But so one doubt, sir. But in Shanach we have then sya is getting lopa. Not shya. It is shanach. Shanach. Shanach, sya and cha. Not shya. Shya. It is not shya. Shanach. Sha a na a cha. Shanach. Not sya. S-Y-A. No. S-H-A. Sha. Shanach. That's right. So we are doing the itsangya of S-H by Lashakvadatite and cha by halantyam. So it becomes shit. Exactly. So it becomes shit. Yes. Okay. Both. It becomes both. Yeah. Okay. Right. For example, if I do the itsangya of dukriya karane, so do will go and nya will go. So that particular will be dvit and nyat dhatu. Okay. So just keep this in mind. Most of the times the dhatu where we have done the itsangya of nya, cha cha ja ja nya, or have both double ubhaypadi dhatavaha. Gint pratyayasya sanya bhavati, gint bhavati te atmanepadi pratyaya, atmanepadi dhatava bhavanti. So this, why Panini has done this? Because he wanted to bring this focus into mind, that by following this rule and pattern, we can understand by just going through the dhatu that what group they will have. Of course, there will be exceptions, but 98% of the times we are getting this. Then there will be another thing called swarit. For example, anunasik achaha tasya itsangya asmabhi kritah karo. Kitrashah swaraha asit. Uddata anuddata va swarit. So swarit evam yit pratyaya yit ye dhatuha santi te sarvada what do I say? Ubhaypadi bhavati. And anudatta git bhavati te sarvada tasya atmanepadi pratyaya bhavanti. That is the reason we will come back to, don't write it down. This is too advanced. We are gradually will come back to it. Okay. Just because we are starting with the itsangya. So why we are doing the itsangya? Because, and to do the classification, what is the meaning of that particular classification? That we can segregate a dhatu and a pratyaya. So when we do the pratyayas, we divide the pratyayas into sarvdhatuk and arudhatuk pratyaya. So what are sarvdhatuk pratyayas? Ting shit sarvdhatukam. Shit pratyaya and ting pratyaya are called sarvdhatuk pratyayas. And ardhatukam sheshaha, or other pratyayas apart from ting and shit are called ardhatukam. So kta pratyaya, ktavatu pratyaya are ardhatuk pratyayas. And shatra and shanach pratyaya are sarvdhatuk pratyayas. So why we are getting the rupa based on the lat lakara rupam? Because lat, lot,
ling and lat, lot, lung and vidhiling are 4 Sarvadhatuk lakaras. And that is why we are getting the pathanti iti rupam, ti iti asmabhi niskashayate, pathan iti rupam bhavati khal. Patha iti dhatoh pathan iti rupam bhavati. We see why we are saying that, because it is the shit pratyaya, sarvadhatuk pratyaya. Vartamane, lat vartamane kale lat lakar api bhavati. Similarly, shatru and shana chapi bhavati. That is upon us that what we want to use. We can use lakar, we can use pratyayas. Okay. Krishna Priya Chakravarti Mahodaya Avagamyate va? Klishtaha vartate? So if you are finding it difficult, please don't hesitate to ask me. Okay, don't hesitate. I will explain it again and again. It's a little difficult, but understood partly. So see, I am understanding. 1 minute, sir. So what I am trying to do, say for example, we will be conducting this, suppose this class after 3 to 4 classes after. But sometimes while explaining a particular sutra, for example, here, if I try and reconnect this, so when you are going to that particular level, when I say ting shit sarvadhatukam, so I will say shit pratyayaha are sarvadhatukam. So we'll say what is shit pratyaya? So then shakarasya itsanya yasya kriyate te shat pratyayaha. And they are called sarvadhatuk pratyayas. So that is why I am giving you a sanskara, shravana sanskara, so that you can, when you hear it again and again and again, so this will be inside your head. By the time we'll go there. Sir, okay. Sir, this Tadvita Bhinna means what it is? So which are not Tadhita pratyaya. Okay. Any other pratyaya like krut pratyaya bhavati, stri pratyaya bhavati. Okay. You can use Tadhite sutram there, but not on Tadhita pratyayas. इदानीं तस्मात् अनन्तरम् अस्माभिः किं कृतं सत्वादि कार्याणि यथा धातुं स्वीकुर्मः तस्य धातुसंज्ञा आदौ करणीया तस्मात् अनन्तरं यदा आवश्यकता वर्तते चेत् इत् संज्ञा करणीया तस्मात् अनन्तरं यथा प्राप्यते यथा शक्नुवन्ति चेत् एतानि सर्वाणि स्तराणि अस्माभिः कर्तव्यानि धात्वादेः शः सः प्रथमं सूत्रं कोऽपि स्मरति वा धात्वादेः शः सः धात्वादेः शः सः नो नः नुम् धातोः इदितो नुम् धातोः उपाध्याय उपधायांच I have already placed the PDF of this in my group last week also, because some of my sisters have asked me that you must place it before, so it will be easier for us. So I hope they must have learned and come prepared, because I will be asking them the questions. Not in this group, Mahoday. No, this group only. Not learned. Try to understand a little. No, I have placed this my PDF in this sutra only. After including that this 4 satvadi karyani. Yes. Satvadehe shah saha. Only after reading it we could understand a little bit. So once you have that Varga Karapatram in hand, just go through it and listen to me in the class and watch the video again. You will have the knowledge. If you have some doubts, it will be already clear by the time you will learn. Okay. So now the first sutram, what does it say? Bhatvadehe shah saha. In the it sanya we did what the pratyayasya shakara, shah pratyayasya.
But what about the dhatu? For example, stha इति भवति, धातु अस्ति stha, तस्य stha इति आदेशः कृतः। मूर्धन्यषकारस्य स्थाने दन्तसकार विधीयते। यदा दन्तसकारः भवति चेत् तत्र यदा तवर्ग भवति चेत् तस्य तवर्ग आदेशः भवति। मूलतः किम् अस्ति यत् इति एते सकारादय धातवः एव भवन्ति। Before they were sakaradi dhatuh only, but due to some reason the Panini has converted most of these dhatus into murdhanya shakar to make them shopadesha dhatavah. Shopadesha dhatavah. Sha upadesha, shopadesha. So why? What was the reason? I had already explained. So I'll just share it, what we had done before. Then we can proceed. एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का नास्ति खलु? नैव महोदय। सम्यक् दृश्यते वा? महोदय। कार्याणि सत्वादि कार्याणि इत्युक्ते धात्वादेः शः सः यदा मूर्धन्यषकार धातोः आदि विद्यते तस्य सकारः करणीयः, दन्तसकारः करणीयः। किं नाम करणीयः इति धातोः औपदेशरूपे आदिस्तस्य सकारः करणीयः इति निर्दिष्टः अस्ति अत्र। परन्तु केन कारणेन कर्तव्य इदानीं कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। आदौ तत्र श्वद इति धातुः अस्ति। श्वद आस्वादने, टु टेस्ट, तत्र स्वद इति रूपं भवति, फाइनल रूपं। So just when we are taking a particular dhatu in the upadesh avastha, we cannot directly add the lat lakar or lot lakar or krit pratyaya to that. We have to modify accordingly what we find in the daily usage, right? Gum, for example, gamru, I cannot use a tip pratyaya for that. So I have to bring it to the gum form. So, sir, मुझे तो भादी अदादी ये जो है ना, दिवादी स्वादी, ये नहीं समझा तो दादी। अभी मैंने गण के बारे में मैं आया ही नहीं हूँ। हाँ, आप सब समझेंगे, हम लोग सब प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है। अभी जो मैं करता हूँ आप समझिए, क्योंकि हम लोग ने एक धातु, कोई भी आप धातु पकड़िए। नहीं, पीडीएफ मैंने देखा ना, तो तब मुझे उसमें मैंने गण तो लिखा ही नहीं था। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। जब गण करेंगे तो गण समझा देंगे आपको। ओके, तो धन्यवाद। यहाँ पर क्या लिखा है, जो धातु को शोपतेश बोलते हैं, श्वद धातु, उसको स्वद आदेश होता है। तो प्रथम मूर्धन्य शकारस्य दंत सकार करनी है। अत्र पुनश्च ईश्प इति धातु अस्ति। अत्र ईका ई अस्ति, आदिर्यी प्रवः इत्यस्मिन् सूत्रेण अस्य इत्संज्ञा भवति। पुनः पकारस्य अनन्तरम् अनुनासिक अकार अस्ति, तस्य अपि इत्संज्ञा करणीया। तर्हि स्वप इति तिष्ठति, श्वप तिष्ठति, परन्तु तत्र उपश धात्वादेः शः सः कृत्वा स्वद इति रूपं भवति। So what is the step from yashwapa? We did the itsanya of yi from the adir to davaha, and akara, anunasik akara, by which sutra? Tell me the sutra. प्रथम सूत्रम वदतु। उपदेशो अनुनासिक, उपदेशे जनुनासिक इत। So by this sutram we have done the itsanya of the akar, anunasik akar. So now the dhatu will be shwap, starting with murdhanya shakar. So when we are coming to second stage, we will do the
sakara of murdhanya shakara. So swap iti rupam siddhyati. Now that swap we will add the pratyayas. If gana vikaran pratyayah bhavati athava lakara pratyaya vikaran pratyaya api bhavitum arhanti, parantu dhatubhya eva vidhiyate. Punascha atra shaha iti rupam. Chakyarthe to be satisfied. Atra saha iti rupam. Shun iti dhatu abhishave su iti atra final rupam atra. Shincha sharane, sinch to sprinkle, to moisten. Sich iti rupam bhavati. Astu? So how do you pronounce the second one, sir? Which one? Ishwapa. Ishwapa. So how I will like to tell Miss Lakshmi also, because she tells nakara, ni, it is not ni. Use the talu, ta, tha, da, dha, na. It is a talu, danta varna. Nakara is a danta varna. Ta, tha, da, dha, na. Now, when we are saying talavya, cha, cha, jha, jha, nya. So you take your jiva to the talu, but don't touch the danta. Just before. So, nya. Ya. Iti avashishyate. That is the rupa. It will take time, but ultimately you will get it. Okay. Nishwapam. Nishwapam. Astu. धातौ आदिस्थात् शकारात् परः अव्यवहित रूपेण उत स्वरस्य व्यवधानेन णकारः अस्ति चेत् तस्य नकारात् भवति. यथा क्षण संभक्तौ णकारस्य अपि नकार भवति. So we are reversing the shtutva sandhi. Actually it was tavarga sakara. It was converted by Panini to Murdhanya Shakara and Tavarga. We are again reversing that process. So whatever the conversion was done is got nullified. So again we are getting back to the same Danta Sakara and Tavarga Varna. What does Avyavahita Rupena mean? Without any Varna in between. So there is a Stha. तो सकार थकारयोः मध्ये कोऽपि स्वरः नास्ति. Okay. सथा नास्ति, केवलं स्था. Shna will become sna. Shuniha will become sniha. Shanum will become san. अत्र उपदेशे अनुनासिक इस अनुनासिक उकारस्य संज्ञा भवति. क्षण इति अवशिष्यते. पुनः धात्वादेः शः सः इत्यनेन शकारस्य दन्तसकार अभूत्. So what apart from about 90 dhatus are shopadesha dhatus, out of which are starting by either a shakara or danta sakara in the dhatu part. But there are some specific dhatus which we have to identify which dhakara has shopadesha, right? Which dhatus has got the upadesha of shakara. So this karika I have sent in the group. It was there in my PDF. So these dhatus, sekru, srup, sru, sruja, stru, stru, styai, kadapi shopadesha anha. These 7 dhatus are not shopadesha dhatu. Because when we see the dhatu with starting with danta sakara, we have it in mind that it might be from shakara, dhatvadehe shahasa. But these 7 dhatus are specifically told by Panini that they are not. Okay. And Shwaska, Swida, Swada, Swanja, Swapa, Swinga.
सर्वदा शोपदेशा भवति. So you can just identify that these are all ekach dhatu. Ekach having only one swara in between. Okay. When I say pat, so pa, tha, only one swara called a. So these are called ekach dhatu, having only one swara. Here, श्वस्क अत्र केवलम अकार अत्र एकमेव स्वर अस्ति. एतान् विहाय ये एकाच सकारादय वा शकारादय धातवः सन्ति तेषु. Now there are conditions to be met. सकारे परे अच भवति. इदा सुद सिध इत्यादय एषोपदेशाः सन्ति. सकारे परे दन्त्यव्यञ्जन भवति. तत्तवर्गस्य त थ द ध स्थास्तु आदयः तेषोपदेशा धातवः इति उच्यन्ते. So the dhatus has to be ekach dhatu, having only one swara. This you have to memorize or just go on learning. I know it is getting very boring. We can take a 5 minutes break if you want. Want to have a break? 5 minutes? You can just revive yourself. No, sir, we'll continue, sir. No, sir. Just a minute. What does that vyavadhanena mean in the previous one? Avyavahita is without varna in between. Yes. And what is vyavadhanena? Where did you find vyavadhane? That dhatu adistat shakarat paraha in that condition. Kutra asti? Where you explain that dhatu adistat shakarat paraha avyavahita rupena. No. After this. It comes after the etadrisham shakarasya sakaradeshe krite dhatau dvau anyau parivartanam api bhavatah. That paragraph. Blue color lines, Mahoday. So avyavahita rupana means, what does it mean, sir? Without any break. For example, I say stha, so there is no swara in between a sakara and thakara. Yes. I'm not saying satha, right? Stha or shtha. Avyavahite hai vivdhan vidhaya. Vyavahar, there has to be no vyavadhana in between. Yeah, in the same paragraph, there is that word vyavadhanena nakaraha. What does that vyavadhana mean? Kutra asti atra. Shakar avite uta Page swarasya number 2, vyavadhane. Here. Here. Vyavadhanena nakaraha. Here, what is it says that Shra paranta eka swara bhavet. Swara bhavet. In the previous, there was no swara in between. Yeah. And here there is one swara. Koi bhi swar ho sakta hai. So here you say shana, there is an akara here after murdhanya shakara. Okay. So there is a vyavadhana of a swara only. That means it has to be there. Yes, for the nakara to be done. Okay. So here, when I say shniha, it will be a sniha. In the second example, there is no swarana, sir. Here. Shanam. Shana a iti to swara hai ba? Okay, right. Okay. There is only one swara. It can be either in the beginning or the end. Okay, right. For example, ni is dhatu asti, ni nayati. So there is a swara at the end. Yeah. Swarant dhatu. Yes. So what is the use basically? When we are using adesha pratyayoho, it is sutram bhavati. I had explained this sutram last time. So
when we are doing the shakarasya sakara, it becomes an adesha, because Panini has given that adesha that you have to do this. Okay. So what does this particular sutra says? Adesha pratyayoho inko. We have to first understand the in pratyaya. Pratyahara. What is in pratyahara? Can anyone tell me? In pratyahara. What varnas are covered in pratyahara? I, U. No. This has going up to Lana Pratyaya. Okay, okay. So starting from I, U. E, all swaras except A and A and Antastha. So, and Kavarga. So, Ina is A, I, U, Avihaya. I, U, R, R, A, O, I, O, Ha, Ya, Va, Ra, La. And Kavarga. Uchu, Tutupu, Kavarga, Ka, Kha, Ga, Gha, Ng. So, if this particular Adeshasya Sakara or that Sakara is a part of a Pratyaya. For example, in the Sun Pratyaya, the Nakarasya is Sanya Bhavati. So, Sa iti avashishyate. So, Sa, Sakara is a part of a Pratyaya. Avyaya, Avayava of Pratyaya. So, if that particular Pratyaya, if the particular Sakara is followed after the Inko or In and Kavarga, that particular Sakara will be converted into Murdhanya Shakara. Okay. For example, I have explained Rameshu. Rama adhikam Shu. Sup pratyaya antima saptami bahuvachanam. Sup iti pratyaya. Here when I am saying sup, it is not all 21 pratyayas, but last pratyaya called sup, which denotes the saptami bahuvachanam. Keval su iti avashishyate. So here, because it comes after A, Rame and Su, it becomes ekarasya pare in bhavati, ekara in pratyay bhavati khalu, pratyahare, tasya murdhanya shakarah bhavati. So Rameshu iti rupam bhavati. But latasu, akara akara in pratyahare na bhavati. So latasu. Similarly, kavarga vak su, vakshu. It is not vak adhikam su, vakshu. Kakare pare sakar, danta sakar. So aniko pratyay aniko iti bhavati nantaram sakara bhavati chet tasya murdhanya adishtah. So vakshu iti rupam bhavati. Similarly, if the rit lakar, when we have an idagam, patishyati, patha adhikam I, adhikam sya, adhikam tip. So ikare pare sya iti asti. So sya iti pratyasya sakar avayava rupena bhavati. So tasya danta sakarasya murdhanya adesha bhavati. Patishyati. Okay. That is why adesha pratyayoho iti sutrena bhavati. So we have to learn this type, this skarika, right? So first 7 dhatus are never shopadesha. So when you are using these dhatus, it will be never converted to the murdhanya shakara. Then shwaska, svida, swada, swanja, swapa, swing. They sarvada shopadesha. Even if you see swada or shwaska, whatever form, these are always shopadesha.
And from the remaining shakaradaya, sakaradaya dhatushu, then we have to find out the combination. Sakare pare ach bhavati, da sud, tari svid, sidh iti bhavati. Tatra अथवा सकारे परे दंत व्यंजन भवति, दंत व्यंजनम तकार तवर्ग तथा दधन तस्था स्तु आदयः ते शोपदेशः धातवः एव भवति. And the reason of shopadesha is to do the adesha pratyayoho. Now this adesha pratyayo will not be applied to nam dhatu. Nam dhatu is sanadi dhatu. Sanadi pratyaya will be added to a nam padam. For example, Shanmukha iva acharati, one who behaves like a Shanmukha. So to denote that, we use a kyang pratyaya, which is a part of sanadi pratyaya, kyang. So Shanmukhayate iti rupam bhavati. Shanmukhaya iti dhatu bhavati. So it will be not converted to Sanmukhaya. It will be Shanamukhaya, because this sutra's prasakti is not in the nam dhatu. अथवा षण्ढायते, षण्ढ इव आचरति, षण्ढायते. And this shtivu and shvashka will not be converted into the danta sakara. Shtivati and shvashkate eva bhavati. Shtivu and shvashka. Shvashka and shtivu. These two dhatus are exceptional to this rule. And of course the nam dhatus. Again, second sutram, nonaha. धातौ आदिस्थिता अणकारस्य नकारः घरणीयः. उपदेशे धात्वादेः अणः नः. Similarly, what we have done with the shopadesha dhatuva, this is called anopadesha. आदौ ते धातवः नकारादयः एव आसन्, परन्तु पाणिनिना केन कारणेन अणोपदेशः क्रियते. यदा वयं उदाहरणानि पश्यामः, णीय प्रापणे तत्र ञकारस्य संज्ञा भूत्वा नी इति अवशिष्यते. णु सुतौ तत्र नु इति अवशिष्यते. नश अदर्शने नश् इति भवति. नुद प्रेरणे नुदति नुद भवति. अदादिगण तुदादिगणस्य धातु अणभ ईशायां नभ इति भवति. So we are converting from anakara to nakara. Similarly, where we are converted to murdhanya shakara to sakara, here we are doing the same shtutva sandhi, reversal of the shtutva sandhi, similar rupam. So here also there are some exceptions. There are 7 dhatus which are not nopadesha. Nardu, Nat, Nath, Nadh, Nand, Nakka, Nru, Nut, Etan Vihaya Sarve Dhatavah Anopadeshaha Santi. 7 dhatus Vihaya. Sorry. There are approximately 35 Anakaradi Vanakaradi Dhatava Bhavati. Teshu एते सप्त धातवः विहाय सर्वे अनोपदेशः एव भवन्ति. ये धातवः कदापि अनोपदेशः न स्युः. अस्तु, अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? किञ्चित् क्लिष्टं वर्तते, अहं जानामि, परन्तु ध्यानेन शृण्वन्तु. 5 निमेषेभ्यः विरामं चिकीर्षन्ति किं वा स्वीकर्तुम् इच्छति? महोदय, हाँ, वदतु. नर्दम इति धातु
अनुनासिक, इसमें अनुनासिक प्रथम सूत्र नहीं लागू होगा, है ना? अकार नर द अ है ना इसमें। यहां पर जो आप ऊपर में रेफ देख रहे हैं वो उपधा है, न र द अ ऐसा है, रेफ देख रहा है वो आपको। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, इसका कारण है कि ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू नो, without which we will not be able to progress into the prakriya. First step you have to do after getting the dhatu is to do the dhatu sanya. Bhavadayo dhatavah athva sanadantya dhatavah. After that only you can add the pratyayas. Without which, no, cannot add the pratyayas. Now, idito num dhatoho. Idit dhatavaha ye santi. तेषु नुमागम भवति, नकारस्य आगमः भवति। कुत्र भवेत्? मिदचोन्त्यात् परः मित् आगम अस्ति, मकारस्य संज्ञा भवति, अनेन मित् आगम भवति। कुत्र मित् आगम भवति? यदा वयम् आगम आदेश विषये पठितवन्तः तस्मिन् समये मया पाठितम् आसीत् यत् आगमः त्रिविधाः सन्ति, कित्, मित् and tit आद्यन्तौ टकितौ and मिदचोन्त्यात् परः। तत्र मित् अस्ति, नुम् इति मकारस्य इत्संज्ञा भवति, अनेन मित् भवति। So where does the nakara to be placed in the dhatu? Antim acha pare. So when the dhatu has only one acha, so it's the only first swara and the last swara. So you have to place after the first swara, antim acha. Here, an example, vadi abhivadana sutyo ti dhatu. So abhivadana sutyo iti vad rupam bhavati adav. When we do the it sanya of anunasik ikar, it becomes idit and have vad iti avashishyate. So when the sutra kicks in, idito num dhatoho, when the dhatu is an idit, the numagama bhavati. कुत्र भवति? अंतिम अचः परे। अत्र एकमेव अच अस्ति, अकार, व अ त। अकारे परे नकारस्य आगमः भवति, तर्हि वन्द इति रूपं भवति। So now there is two steps also. So first, because it is a consonant and this is it's not a pada, apadanta, we can say apadanta. So when the nakara is at the end of an apadanta and is followed by a yaya varna, yaya. So starting from haya varat of ya and kapaya. So that has to be, if there are there followed by this yaya varna, that nakara will also be converted into anunasika, sorry, anuswara. So the sutram will be nascha apadantasya jhali, nahacha apadantasya jhali, jhali pare, jhala is avashyakam. So nascha apadante jhal varne pare, so jhal will be fourth, third, second, first and shakara, three shakara and ha. When I am repeating again, when the nakara will be converted into anuswara, when the nakara first, it is not a padam, it is not completely a padam now, so we are making a padam, right? So, and is followed by a jhal varna. Jhala is either of 4, 3, 2, 1 and shakara and ha. If it is followed by this, then the nakara
will be converted to Anuswara. So this will be Vand, like this. Then again it kicks up Anuswarasya Yai Parasavarne. So when this is followed by a Parasavarna Savavarna, it again converted to the fifth letter of that particular Varna. I know this sounds like, why do we need this? Because the Nakara is already there. But this is the original Nakara. When we go into all different Varga, Kavarga, Chavarga, Tavarga, Tavarga, and Pavarga, here we are just telling as a Tavarga. So there is no change in the apparent Rupa. So it stays as Vanda. But what about Anka? It is staying as Vanda, sir. Excuse me. It is staying as Vanda again coming back to Vanda. Yes. Because first we are doing as an Anuswara, then again we are doing the Parsavarna Sandhi. Okay. Because the Dakara is a Tavargasya Varna. Tavargasya Antim Varna api Nakara eva bhavati. Yes. So again it comes back to Nakara. But so there's no difference, no, sir, between that and there this. Is no difference. So this is just the process. Earlier it was Va plus A plus Na plus Da, Vanda. Now again you are making it to Va, Vanda. Same. Anuswara. Now why I am coming to this is now this. So the first example, Aki Lakshane. Now this comes to the change of a Kavarga. So what is the Panchama Varna of Kavarga? Ankara. So Anka iti bhavati. We are doing the Numagama, Anaka, and with that Nakara will become Anuswara, and then Anuswara will change to Parsavarna. Gankara. Ka, ka, ga, gha, nga. So here the Rupam is Anka. Similarly, Bhaji, Chavargasya, Cha, cha, ja. So tasya Panchama Varna Idnya. So tasya Bhanja. This is how we write, right? Fourth, fifth letter. Parsavarna. Yada apadante asti. Tasya apasavarna karniya. Kunthi, Tavarga, Kuntha. These are all having a Numagam only, but after the Numagam, it is converted into Anuswara, and after the Anuswara, it is converted into Parasavarna. Now, what if there is no Parasavarna? For example, all three Shakaras don't have Parasavarna. Okay. Here, Prasi Bhashayam Sakarasti. Tasya Parasavarna Nasti. Atra Tansa iti Rupam eva bhavati. Okay. Transa eva bhavati. Tasya pura Parasavarna to kimapi nasti. Similarly, atra Hakara asti asti. Tatra Broha iti asti. Anuswara sya yai Parasavarne. Yaya Varna bhavati chet Hakara na bhavati. So this sutra doesn't apply to Hakara. Anuswarasya pare yai Parasavarne. If it is Yaya Varna, then only Parasavarna comes. So Hakara is not in the Yaya Varna. Similarly, Sakara also, the same thing. And here, Invi, we are using Ivi Dhatu, that's a Numagam Krutva, Anuswara na bhavati. Yasya keval Nakara eva avashishyate. Because Anuswarasya Nascha Padantasya Jhali. So the next letter has to be a Jhal Varna. So Vakara is not into a Jhal Varna. So the Nakara will not be converted to Anuswara. So just check here. Ivi iditonum dhatoho nakarasya agamaha inva iti rupam bhavati. So nascha apadantasya jhali iti sutrena nakarasya anuswara vayam kartum na shaknumaha yatohi tatra vakara jhal varne nasti.
झल मीन्स झल इति प्रत्याहारः अस्ति न? जलवर्णम। झल वर्ण आपसे मैंने बुलवाया था ना, हाँ वर्ग चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथमा और शकार और ह। वो झल वर्ण आता है तो वह तो अंतस्थ में चला गया, तो नश्च अपदांतस्य झली। तो ये झल वर्ण नहीं है तो ये सूत्र का प्रसक्ति ही नहीं है इसमें, तो नकार का अनुस्वार ही नहीं होगा। तो वो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। इसमें सूत्र के आधार पर नकार का कब अनुस्वार होता है, झल वर्ण परे होने से, और जिसका पर सवर्ण नहीं होगा उसका नहीं होगा, जिसका पर सवर्ण है ही नहीं तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद। How does that na become anuswara? Because we know about the ma. But this is nakara, not makara. Yeah, that's what is the sutra for that nakara becoming an anuswara? Nascha padantasya jhali. I have given that in the sutra, in the PDF I have sent. Okay. 8324. Okay. 8324. Nascha padantasya jhali. हाँ, वदतु. What are these words? Smrityam, Pratighate, Bhashayam. This is the in the meaning. In the meaning. Achha. What is the meaning of aki? Is lakshane. Bhaji bhashayam. This is the artha of this particular dhatu. One of the many arthas, meanings. Uthi pratighate, to hurt someone. So, etavat parintam clear? So, even if you have doubt, just go and revisit the video. Keep the PDFs in front of you and just practice. You have to practice. I don't have any other choice. महोदय, आपने कहा कि एक है तो राम में शु आता है और आकार अस्तित्व लतासु, ऐसा अगर इकार है तो इसमें भी आएगा, वो तो ईण प्रत्यय में है। मैंने आपको बताया ना, पठिष्यति का आपको मैंने समझाया था, ईकार के परे स्या है तो वो प्रत्यय का सकार है, वो तो पठिष्यति हो रहा है ना, मूर्धन्य शकार हो रहा है। केवल अ आ का सु होता है ना, अ और आ का सु होता है, उसमें मूर्धन्य नहीं होता। और यदि कवर्ग छोड़ करके दूसरा होता है तो भी सु होगा, उसमें मूर्धन्य नहीं होगा। इन को सूत्र याद रखिएगा, इन को हो, इन को का मतलब हुआ इन प्रत्याहार और कवर्ग के बाद पंचमी विभक्ति, इन को हो। ऋण में क्या होगा, इकार से लेकर के लण प्रत्यय के अणकार तक और कवर्ग। महोदय वदतु। महोदय, इत्यस्मिन् पूर्वं भवता स्थापितम् एकं करपत्रम् अस्ति, तस्मिन् पत्रे सुब्धातूनां विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते, नोनः विषये तस्य प्रसक्तिः अस्ति, परन्तु इदानीं भवान् न तस्य प्रसक्तिः नास्ति। सुब्धातूनां विषये शोपदेशः अपि न भवति, णोपदेशः अपि न भवति। सुब्धातूनां विषये वो पैराग्राफ में मुझे एक सेंटेंस समझ में नहीं आया महोदय। इसमें नहीं है वो पैराग्राफ, वही मैं सर्च कर रहे। अत्र अस्ति महोदय, नेक्स्ट पैराग्राफ। यस हाँ, प्रकृत सूत्रेण केवलम् औपदेशिक धातुषु विद्यमानस्य एव आदिस्थ नकारस्य नकारादेशः भवति, तत्तु सुष्ठु एव। आदिदेशिकधातूनां विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। अस्तु, अतः नकारम् आत्मनः इच्छति अस्मिन् अर्थे नकारशब्दात् सुप् आत्मनः क्यच् इत्यनेन सूत्रम् किं कार्यं भवति महोदय? अत्र उदाहरण न this is catch pratyaya is used to for the purpose of he wishes something for himself.
say for example, putra atmanam ichchati. He wants to be he wants to have a son of his own. So the dhatu will be putriya. So saha putriyati. He wants a son for himself. In that sense. So in this case, I have used that particular pada wants nakara for himself. Anakara. So anakar इसमें अणकार्य इति धातु भवति. अणकार्यति. स padam सह padam अणकार्यति. So this padam wants anakara for itself. This is the meaning. This is, I have just given an example. It doesn't mean it has to be like this only. I have given by me. How would you accept a nam dhatu? Because you have to have a nam dhatu starting with a nakara. So this thing came in my mind. Just, something, say for example, any word, for example, any nam, any name wants to have a anakara. Starting, for example, Shanamukha, have a anakara. But when we write in English, we only say n. We cannot design as ana, right? So that particular shabda wants anakara for itself. So anakaryati. So shabdaha anakaryati. नकार्यते न तेन त्यच प्रत्यय भवति तत् परस्मैपदी रूपं भवति त्यच प्रत्यय परस्मै रूपपद भवति क्यङ्ग प्रत्यय परे आत्मनेपदी भवति बट तादृशाः शब्दाः विरलाः एव केवलम् उदाहरणार्थम् एव मया दत्तम् आमां अस्तु महोदय So any nam dhatu starting with an akara, so it's very difficult to get, but this has been generated. So I found it, the dhatu in the Ashtadhyayi. I didn't search for myself. I got it from there only. So anakarya will be the dhatu. Anakaryati, sorry, parasmaipadi will be the rupa. Okay. Now we'll start the fourth and the last sutram, upadhayancha. Now we have to understand what is the upadha. What is the upadha? Can anyone tell? Because we have learned that upadha. Last but one. Last but one. नहीं उपधायांच इति सूत्रम उपधा इत्युक्ते अलो अंत्यात उपधा अंतिम अल के पहले वाला जो वर्ण है उसको उपधा कहते हैं लास्ट बट वन नाउ फॉलो carefully here there are three conditions for this sutra to be accepted धातोः उपधयोः हल परयोः so first dhatu has to be halant dhatu. First dhatu has to be halant dhatu. And tasya upadhayam. For example, if I say dhatu, kurd, right? Kurd dhatu. So dakara asti, hal asti. So the halant dhatu asti. Tasya purvam, tasya upadhayam, ref athva vakara bhavet. Atra ref asti. Kurd iti ref asti. पूर्वं तस्य उपधायाम इक वर्ण भवे दानी रकार वकारयोः उपधायाम इक वर्ण भवे so what is an ik varna can anyone tell me iko yanachi sutram asti खलु so what are the varnas e u ril so ik varna asti te dirgha bhaveyuh so there are three conditions. First, the dhatu should be halantam, halant dhatu, ending with a consonant. Tasya upadhayam rakara vakarayoh va bhavet. Either refa or vakar. Danim rakar vakarayoh upadhayam ik varna bhavet. So hal letter at the end, vyanjanam at the end, ref or vakara in the second last position and ik varna in the third last position. That part, if this condition are satisfied, then the ik varna will get a dirghadesha. For example, kurd, to jump,
अत्र पश्यन्तु दकार इति अन्तिम हल् वर्णः अस्ति, तस्मात् पूर्वं रेफ् इति अस्ति, तस्मात् पूर्वम् इक् वर्णः अस्ति उ, तर्हि इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति कूर्द इति। कूर्द कूर्द कूर्द। सिमिलर्ली उर्वी इति अस्ति, तत्र इत् संज्ञा भूत्वा उर्व इति भवति, तस्य पुनः दीर्घ भवति ऊर्व इति। मूर्छा, तस्मात् इत् संज्ञा भूत्वा मूर्छ इति भवति, परन्तु पुनः मूर्छ इति भवति, इक् दीर्घ भवति। This is if you say it is a comparatively easier sutra, but 3 conditions have to be fulfilled. The dhatu has to be halantam, halan, and the upadha will have either a ref or vakara, and that ref and vakara se upadha will be an ik varna. So 3 conditions, if they are satisfied, then the ik varna will be elongated or will have a दीर्घादेश। पूर्वी में द्वौ उपधा, सॉरी, दोनों कंडीशन आ रही है। हाँ, तो दी आती है, मैंने तो 3 लिया, दी आती है तो उपसंज्ञा आपकी पूर्वी वाले जो लास्ट में इकार की संज्ञा हो जाएगी, तो वह पूर्व बचेगा, और रेफ है तो उसके बाद में पूर्व करके इसकी धातु की अवस्था राष्ट्र में रहेगी। तो उपधायाम यहां पर जैसे लगता है कि सप्तमी है, बट ये आर्ष प्रयोग है, ये षष्ठी द्विवचन है। हम लोग के आगे यदा अस्माभिः पूर्वं पठितं यत् स्थानी निमित्तं, यदा स्थाने भवति तस्य आदेश भवति, तस्य रिप्लेसमेंट भवति। तो षष्ठी स्थाने योगा, यत्र यत्र षष्ठी विभक्ति भवति तस्य स्थाने आदेश भवति। तो अत्र उपधायाम इति काचित् अचित् आर्ष प्रयोगः उपधयोः इति भवेयुः, उपधयोः, बिकॉज रेफ एंड वकार इज द्विवचनम। सो षष्ठी द्विवचनम, तस्य उपधायाम एक वर्ण भवतु, तर्हि एक वर्णस्य दीर्घादेश भवति। उपधयोः इति शुद्धम, उपधायाम न परंतु उपधयोः, बट this is an arsha prayoga, so we are taking as it is. तत्र रेफ वकारौ इति निर्दिष्टम् अस्ति, परन्तु वकारस्य उदाहरणानि न लभ्यते। There is one sutra called Lopor Vyovali, so that sutra will get the lopa of vakar. So only we find the dhatus ending with having a refa in the upadha. Okay. अवगम्यते वा? शंका अस्ति खलु? I know everyone is feeling very sleepy, and this is I am teaching mathematics, so everyone is getting bugged. One doubt: in these pratyaharas, we normally take from the last one. No, like, is this ena an exception to that? No, ena mostly have up to lan paryantam only. There is only one case where you use the ana. Is when there is a in the sutra where in the when is adeng gunaha, it is sutra. So in that case only we have a ana pratyahar in the a I u. Okay. Otherwise it is e to lana. Lana. Okay. Sir, I have 2 doubts here. One is the basic one again. Starting with it is satvadi chatvari karyani. Satvadi iti, there is Tattva ityukte, when we are doing a shakarasya sakara is sattva, it's called sattva. So shakara sattva adesha. It's like, it is just like jashtva adesha or chartva adesha. Okay. So it is just a tathit pratyaya,
and we are adding to tva, it makes to an adesha. But it is sat sa adet satva adi, satya adi, and sakara karniya tada anantaram etadashaya adayah karyani. Acha, okay. Etc. This and that, etc. So we have done shah-saha, then no-naha, numagam, and updhayancha, updhadirgha. But satvadi means sa plus ta plus adi? Satva is to make a sakaradesha. Okay. Satva. And adi is meant etc. Okay. And then second, sir, lastly is again, just now you said that Prakriti is the other thing, that one is slightly doubtful, sir. And have the Prakriti Sutrena Kevalam Aupadesika Dhatushu Vidyamanasya Adistha Nakarastha. So two doubts. One Prakriti Sutrena iti one doubt. Aupadeshika. Prakriti Sutrena means by this sutra only. What has been stated. Okay. And Aupadeshik is Aupadeshik is what have been told by Panini, that apart from 2000 dhatus, but Aupadeshik dhatu and Nam dhatu is what we are getting. We are making new dhatus by adding sanadi pratyayas. For example, if you are adding a san pratyaya to pat dhatu, will be a new dhatu called papat. Right? Yes. And again, we are adding a nich pratyaya to pat dhatu, will get pati as a new dhatu. Correct. So this pati will be nam dhatu, and this papatha will be a nam dhatu. Okay. Similarly, another dhatu will have a kyang pratyaya will be there, and all different pratyayas will generate a different type of nam dhatu. Okay. So this pratyaya, this particular sutra is not applicable to that nam dhatu. Only the Aupadeshik dhatu, that around 2000 dhatus. Okay, sir. Aupadeshik means like Dukrinch, those things, right? Dukriya, which has been given in the Upadesh Avastha by Panini. Yes. And Prakriti is also same thing? That is understanding same? In nature. Prakriti, in the sense, Prakriti Sutrena means Prakrut Sutrena, by this sutra. It's okay. What has been stated. Right, sir. Thank you. I have one doubt here, sir. Namadhatu is when a Namapadam is converted into a dhatu, right? Dhatu, by using a Sanadi Pratyaya. Yeah. Now, how does this party become a Namadhatu? Patti is a dhatu by itself, No. I have given you an example of Nam Dhatu. It's a new Dhatu, Sanadi Dhatu. It's not a Nam Dhatu. For example, I have given the Nam Dhatu as a Putriyati. Or, for example, Shenayate. Dasayate. Yeah. Right? Shena iva acharati. Kakaha Shenayate. So, Kakaha asti Shena iva acharati. So, Shenayate. Okay. Or Kukurayate. Yeah. He behaves like a kukura. Like a dog. That yes, way. dog or like a dog. Okay, understood. So when you are adding a pratyaya, sanadi pratyaya to a subant or nam pradam, so we generate a new dhatu called nam dhatu or sub dhatu. Okay. प्रश्नाः सन्ति वा? हर एक सूत्र एक मतलब बहुत सारे सूत्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर याद रखेंगे तो आई थिंक जल्दी याद रहेगा। तो इसीलिए तो मैं आपको इसमें सूत्र आगे आगे जैसे जाएंगे, जैसे उपधायांश एक सूत्र का पार्ट है, उसके पहले 2-3 सूत्र में इसकी प्रसक्ति है, लेकिन वो इस में काम में नहीं आएंगे, वो दूसरे काम में आएंगे। ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, धातु को तैयार कर रहे हैं कि हम लोग खाना बनाएं। सब्जी लाते हैं मार्केट से, काट कर छील करके रेडी करते हैं कि अब उसका छौंका लगा करके बनाएंगे हम लोग। तो ये छौंका का पहले वाला प्रक्रिया है, काट करके धो करके हम लोग ने रख दी, अब हमारी बहनें हैं या माताएं हैं वो बनाएंगी। सुबन्तानां विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते इति। शुभ धातूनां विषये, सुबन्तानां मतलब शुभ धातूनां विषये। महोदय, शुभ धातु और नाम धातु एक ही है। अच्छा, ओके। विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते।
उसकी प्रसक्ति नहीं है। ओके ओके That is एग्जांपल षण्मुख षण्मुख जैसे षण्मुख इव आचरति, षण्मुखायते, उसमें षकारस्य सकारः न भवति। ओके ओके इट स्टेज एट षण्मुखायते। ओके ओके अस्तु, समापयामः तर्हि।